Hello friends, today I am going to discuss about entrepreneur. Who is entrepreneur? What are his characteristics and what are the functions of entrepreneur? Okay, basically आज हम देख रहे हैं कि entrepreneur activity दिन के दिन बढ़ रही है. Entrepreneur and entrepreneurship important play रोल कर रहे हैं in today's global business environment. क्या है कि एंटरप्रेन्योर से एक्टिविटी से हमें क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू अनएम्प्लॉयड यूथ को, इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम कर रहा है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो रहा है और इंक्रीज इंडिविजुअल सेविंग एंड इंक्रीज रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी. ओके, सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज हु इज एंटरप्रेन्योर. एन एंटरप्रेन्योर इज ऑर्डिनरी कॉल्ड अ बिजनेसमैन. बेसिकली एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन ही होता है. ही इज़ अ पर्सन हु कंबाइन कैपिटल एंड लेबर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन. क्या करती है, वो अपनी कैपिटल को और लेबर को कंबाइन करता है प्रोडक्शन पर्पस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट के लिए. ही ऑर्गेनाइज एंड मैनेजेस अ बिजनेस यूनिट अज्यूमिंग द रिस्क फॉर प्रॉफिट. ही इज़ द आर्टिस्ट ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड. Thus, in simple language, we can say that an entrepreneur is a business person who not only conceive and organize venture, but also frequently takes risk of doing so to give practical shape to his idea. Basically, in commerce, we already read the term more risk, more profit. So, in that cases, in business also the same. Entrepreneur is a person who create an enterprise. The process of creation enterprise is called a entrepreneurship. What are the characteristics of an entrepreneur? So basically there are a number of characteristics of an entrepreneur, such as हो गया हार्ड वर्किंग में क्या है कि entrepreneur is very much hard working. Like if I talk about any person in the world who want to achieve something, he has to do hard work. So in this case also entrepreneur should be hard working and highly motivated. Next step is organizing skill. In organizing skill, we consider that entrepreneur is thinker or planner. Planner means he can plan something for the activities of business so that he can achieve their predetermined goals. Next step is able to communicate. If you want to achieve anything or success your business or make relationship with people, you have to communicate. So in this case also entrepreneur recognize that the most important part of any business in the human element. He has the ability to communicate is a key successful relationship with people. Third characteristic is accept responsibilities. Taking responsibilities for getting things done and doing them with care and attention means to act like an owner. Entrepreneur accept responsibility with enthusiasm and endurance so that he can achieve their goal in the business. And last and most step is self confidence. देखो, a successful person or entrepreneur is self confident should be. Self-confidence is a hallmark of the entrepreneur. An entrepreneur has confidence in him and he does not rely on other for decision or fate. In a general sense, we can say that self-confidence, if you have a self-confidence, you can do anything or you can do that thing which you haven't know about or know aware about. So basically this is our topic on the basis of and the functions of an entrepreneur. Well, there are three most important functions of entrepreneur: innovation, risk bearing, organizing and managing function. Innovation में क्या है कि is an important function performed by entrepreneur. Innovation means process of making something new in the business, like जो अभी तक आया नहीं है प्रोडक्ट और सर्विसेज इन द बिजनेस, वो आपको लेके आना है. तो entrepreneur should be innovative. In simple word, application of new invention is called innovation. Second thing is risk bearing. Risk bearing में क्या है कि देखो, एवरी बिजनेस में क्या है, रिस्क होता है टाइम का, मनी का, और एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू टेक रिस्क ऑफ पुटिंग न्यू आइडियाज़ इनटू रियलिटी. ऑल्सो दे इफ दे फेल न्यू आइडिया, देयर ऑल्सो एंटरप्रेन्योर हैज़ टू bear the loss himself. Thus risk bearing is the most important function of an entrepreneur. And the third function is organizing and managing function. In this function में क्या होता है कि organizing skill होनी चाहिए और manage the functions activity और business. like अगर
एन एंटरप्रेन्योर शुड बी ऑर्गेनाइजिंग स्किल एंड मैनेजिंग फंक्शंस। इसमें क्या है कि एक एंटरप्रेन्योर को किसी भी काम को करने का, एक्टिविटीज़ का, मेथड्स का मैनेज करना है। मैनेजिंग एक्टिविटी में क्या है कि मैनेजिंग ऑफ फंड्स, लाइक प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फंड इज अ की फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस डिपेंड अपॉन द फाइनेंस. It is a prime responsibility of entrepreneur to raise funds internally as well externally. So all the things which are considered in the business should be to the entrepreneur. Hope you like the video. Thank you.